So in the previous video, we were talking about the movements that were taken place in India. In different groups, we talked about Muslims, we had talked about all India movements. Now we are going to talk about the movements which took place among the Parsis. Different sections of society were witnessing different kind of movements. And among the Parsis, there was a movement which was called as the Rehnumai Mazd-e-Asnan movement. Parsis movements were religious reformed movements, and this movement was started with the Religious Reform Association, who formed this movement in 1851. 1851 में से start किया गया था by a group of English educated Parsis for the regeneration of social conditions of the Parsis and restoration of the Zoroastrian religion to its pristine purity. Zoroastrian religion. The movement had Nauroji, Fardonji, Dadabhai Nauroji, K.R. Kama, S.S. Bengali as its leaders. इस मूवमेंट का मैसेज था was to spread by the newspaper Rast Guftar, which was the truth teller. पारसी के जो religious rituals थे और practices थे, they were reformed and the Parsi creed was redefined. सोशल स्फेयर में देखा जाए तो अटेम्प्ट्स वर मेड टू अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ द पारसी वुमेन थ्रू रिमूवल ऑफ द पर्दा सिस्टम एंड ऑल्सो रेजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड एजुकेशन. ग्रेजुअली पारसीज इमर्ज्ड एज द मोस्ट वेस्टर्नाइज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी. अगर हम सिख्स की बात करें तो अमंग द सिख्स ऑल्सो द मूवमेंट्स हैड टेकन प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, among the Sikhs, the community could not remain untouched by the rising tide of rationalist and progressive ideas. तो सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट की गई थी. सिंह सभा मूवमेंट was founded at Amritsar in 1873. इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे. पहला था टू मेक अवेलेबल modern western education to Sikhs, or secondly to counter the proselytizing activities of Christian missionaries as well as Brahmo Samajists. Lot of things were done. पहला ऑब्जेक्टिव था कि एक नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल्स was to be established by the Sabha throughout Punjab, और second डायरेक्शन था that everything that went against the Guru teachings was rejected and rites and customs considered to be consistent with the Sikh doctrine were sought to be established. इसी के अंदर एक बहुत important movement है, that is the अकाली movement. इसे गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहा जाता है, and this was an offshoot of the Singh Sabha movement aimed at liberating the Sikh Gurudwaras from the control of corrupt Udasi Mahants. ये जो महंस थे ये लॉयलिस्ट और रिएक्शनरी लॉर्ड थे. दे इंजॉयड गवर्नमेंट पैट्रोनेज. तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि टू इट्स रिप्रेसिव पॉलिसी अगेंस्ट द नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह लॉन्च बाय द अकालीज इन 1921, बट दे हैड टू बो बिफोर द पॉपुलर डिमांड्स. तो इसीलिए पास की गई सिख गुरुद्वारा एक्ट इन 1922, which gave the control of gurudwaras to the Sikh masses to be administered through Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee SGPC as the apex body. आज भी ये body गुरुद्वारास को regulate करती है. And the Akali movement was a regional movement but not a communal one. Please remember this. Definitely, social religious reform movement के कुछ positive aspects थे, जैसे it had brought a lot of liberation of individual from conformity out of fear psychosis. Worship made a more personal affair. भगवान की भक्ति को पर्सनल अफेयर बनाने की कोशिश की गई थी. Not only that, at the same time it was made a very important factor here that cultural roots to the middle classes was made to mitigate the sense of humiliation. much needed self respect was gained. जैसे self respect movement थी.
सेकुलर आउटलुक को प्रमोट किया गया था, सोशल क्लाइमेट को प्रमोट किया गया था फॉर मॉडर्नाइजेशन, और इंडिया के जो कल्चर थे, इट एंडेड द इंडियाज कल्चरल इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड एवोल्यूशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस वॉज ब्रॉट अमंग्स द पीपल। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो इट हैड अ वेरी नैरो सोशल बेस, बहुत छोटा सोशल बेस था, इनडायरेक्टली इंकरेज करता था मिस्टिसिज्म को, और ओवर एम्फोसिस दिया गया था रिलीजियस फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर पे, वाइल अंडर एम्फोसाइज किया गया था सेकुलर एंड मॉरल एस्पेक्ट्स के ऊपर। हिंदूज को कन्फाइन किया गया था टू प्रेज टू एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, और मुस्लिम्स टू मिडीवल हिस्ट्री, जो उस टाइम पे नॉर्म्स चलते थे। तो एक नोशन बना ऑफ टू सेपरेट पीपल एंड इंक्रीज कम्युनल कॉन्शियसनेस अमंग पीपल। नेगेटिव एस्पेक्ट एक और था कि हिस्टोरिकल प्रोसेस था एवोल्यूशन का, एंड कॉम्पोजिट कल्चर अरेस्टेड टू सम एक्सटेंट, क्योंकि हर चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुई, बढ़ी, बट बाद में बदली भी। इसीलिए इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट whatever the net outcome of these reform movements was, it was out of the struggle that a new society evolved in India. Obviously, yes. चाहे ये movements के कुछ positives थे, चाहे negatives थे, but this movement had brought changes in the Indian society over a long period of time. And these changes were positives for some and negatives for some. This only comes to the picture when the effects of these movements were seen largely in the subcontinent, the Indian mainland. So with this we end this topic and this chapter also. I thank you all from Vani Academy, and this is me, Vani Mehra, signing off. You can put down your doubts in the comment section, and in a span of a day or so we'll also be putting up questions regarding these topics as MCQ test over here, so that we also have quick revision through these topics. Spread the video as much as you can and help your friends preparing for any competitive exam or learning modern history for general as well. Thank you. Take care.